differential equation of SHM is given as d square x by dt square is equals to minus 36. Calculate frequency and time period. Chalo. Now the differential equation given is d square x by dt square is equals to minus 36x. D square x by dt square plus 36x is equals to 0. Compare it with the standard differential equation. यही था ना standard? So this k by m is omega squared. So calculate and give me frequency and time period. Are you people doing? Yes. Yes. Let me know what is the value. So basically, omega square here is 36. If I compare these two. So omega is equals to 6. 6. That is equals to 2 pi n. So 2 pi n is equals to 6. So n is equals to 6 upon 2 pi. Right? Yes. यहाँ से आपका n आ जाएगा and n is equals to 1 by t. यहाँ से आपको टाइम पीरियड आ जाएगा. लिख के ले लो. Once you're done, let me know. हो जाए लिख के तो बताना बच्चों. Done? Done, ma'am. Done, ma'am. Okay. Let's take next question.
At what distance from the mean position is the speed of particle? क्वेश्चन मेरे साथ लिख के ले लो. Is the speed of a particle performing SHM is half its maximum speed. मैक्सिमम स्पीड से हाफ स्पीड कहां पर होगी ये पूछ रहा है. एंड पाथ लेंथ गिवन इज, पाथ लेंथ का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ द ऑसिलेशन. फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट ये मीन पोजीशन है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसा ऑसिलेट कर रहा है तो ये पूरा जो होता है ये पाथ लेंथ होता है. सो ऑफ कोर्स उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर. और हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, v is equals to under root of a square by x square minus a square minus x square. और हम चाहते हैं कि हमारी स्पीड v max से हाफ हो. मैम v ओमेगा आएगा, v ओमेगा अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x यस स्क्वायर. यस यस. सो यहाँ तक सबने लिख के लिया? यस. सो v max by 2 is equals to omega under root of a square minus x square. Now what? v max कितना होता है? a v ओमेगा. max is omega a. अगर आपको याद हो v max आपका होता है x is equals to 0 पे. सो अगर फॉर्मूला है v max का a square minus x square और x is equals to 0 पे हमारा v max होता है तो v max is equals to a into omega into a square. So v max is equals to omega into a. So v max is omega into a is equals to omega under root of a square minus x square. Omega got cancelled. Amplitude is 5 divided by 2. This is 5 ka square minus x ka square. Taking square, 25 by 4 is equals to 5 ka square minus x ka square. So 25 by 4 is equals to 25 minus x square. 25 by 4 minus 25 is equals to minus x square. So बताओ x की वैल्यू क्या आएगी जहां पर आपका v max, आपका v का वैल्यू v max का हाफ होगा. Calculate and give me the answer. 4.33 सेंटीमीटर. How much? 4.333 सेंटीमीटर. Yes, it is 4.33 centimeter. अक्षय को छोड़ के बाकी कोई सॉल्व कर रहा है? यस मैम. आया आंसर या कर रहे हो? मैम कर रही हूँ. मैम मिला. मिला? 4.8 मिला. 4/8. 4.8. थोड़ा सा मिस्टेक है. It should go by 4.34, 4.35. थोड़ा सा देखना कहाँ पर मिस्टेक किया है. ओके मैम. Yeah. Let's go to the next.
a needle of a sewing machine moves along a path of amplitude 4 centimeter and frequency 5 hertz. Find its acceleration after 1/30 seconds. It has crossed the mean position. So we know already acceleration is omega square x, and A is equals to x is what? X is a sine of omega t. आपके पास a है, आपके पास ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से आपके पास ओमेगा आ जाएगा. टाइम आपको बोल रहा है 1/30 सेकेंड्स में निकालो. कैलकुलेट, पहले बताओ ओमेगा कितना आ रहा है. सॉल्व दिस सम. टेन पाई ओमेगा. So omega is basically 2 pi into 5, that is 10 pi. Keep it in pi, आगे काम आएगा. So A is equals to, कैलकुलेट करो. आपके पास ओमेगा आ गया. कैलकुलेट एंड गिव मी व्हाट इज A. You people are solving? Yes. Yes, ma'am. Ma'am, answer 34.19. Yes. बाकी कोई भी कर रहा है क्या? Yes, ma'am. Yeah. 34.19 meter per second square. Apart from Akshay and the girl, और कोई ट्राई कर रहा है ये? Yes, ma'am. Yes, miss.
Yes, miss. Okay. So I have the answer. Yes. So let's move on to the next sum. A particle performing linear SHM of period 2 pi seconds about mean position O. It is observed that the speed is b root 3 meter per second. When it is at distance v from O. Calculate time required to cover double the distance of B if it is moving away at any instant. So here they have said that the object have a time period of 2 pi. And it have a speed of b root 3 where at a distance of v. So you have to calculate the time required by the particle to reach double the b. So we know omega is 2 pi n, that is 2 pi by t, and time period is 2 pi. So it is 1 radian per second. Now what? We know that v is equals to, let's try to calculate the amplitude of this. A square minus x square. So v is b root 3 is equals to under root of a square minus b square. So if you take a square, b square into 3 is equals to a square minus b square. So it is a square is equals to 4b square. ये b square यहाँ आ गया तो. So a is equals to 2b. तो आपका एम्पलीट्यूड ही 2b है. अब ये 2b कवर करने के लिए कितना टाइम लेता है वो निकालना है. So x is equals to a sine of omega t. So we'll say this time is the time which it will take to cover the distance of 2b. So 2b is equals to amplitude भी 2b है. Omega हमें पता है it is 1 into t2. So 2b by 2b is 1 is equals to sine of t2. So sine inverse of 1 will be equals to pi by 2. Okay. Now ये t2 की वैल्यू आई है which is pi by 2.
but already the object is at B. ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आपका बी पे था, बी से टू बी निकालना था. सो व्हाट यू विल डू? बताओ. ऑब्जेक्ट वाज ऑलरेडी एट पॉइंट बी. ये जो है ये टोटल पाई बाय 2 लग रहा है टाइम, क्योंकि एम्पलीट्यूड ही आपका 2b है, तो पूरे 2b को उसको पाई बाय 2 का टाइम लग रहा है. बट ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्ट 0 पे मीन पे नहीं था, आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बी पे था. सो हमको बी से 2b के बीच का टाइम निकालना है कि बी से टोटल नेक्स्ट बी तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. Yes. The whole amplitude is 2b. तो वो b से नेक्स्ट b तक, यहाँ से यहाँ तक b है, यहाँ से यहाँ तक b है. So ये टोटल एम्पलीट्यूड 2b है. टोटल एम्पलीट्यूड के लिए पाई बाय 2 लग रहा है, बट हमको ये निकालना है कि पहले b से दूसरे b तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा. तो पहले हम ये निकालते हैं कि एट व्हाट टाइम it is at b distance from me. So हमें पता है it is or you can calculate v is equals to a ओमेगा cos ओमेगा t. b हमें पता है कि इस पॉइंट b पे उसका स्पीड इज b√3. a हमको पता है इट इज 2b. ओमेगा इज 1. cos ऑफ 1 into t1. नाउ ये आपको वो टाइम देने वाला है जब आपका ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, और आपको निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा. यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता चल गया इट इज पाई बाय 2. So if you calculate this, you'll get time t1 as pi by 6. So मतलब B पॉइंट तक पहुंचने के लिए pi by 6 का टाइम लगा है. टोटल टाइम आपको लगा है, टोटल टाइम फ्रॉम 0 to 2b is pi by 2 और 0 to b is pi by 6. तो b से सेकेंड b जाने के लिए pi by 2 minus pi by 6 मतलब pi by 3. मतलब इस b से यहाँ तक जाने को आपको जो टाइम लगा है that is pi by 3. समझ में आया? Yes. Yes. लिख के ले लो. हमने जो पहला T2 निकाला वो टोटल एम्पलीट्यूड की पूरे एम्पलीट्यूड को कितना टाइम लग रहा है, इट इज पाई बाय 2. फिर हमने निकाला कि ओके बी पहले बी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वी गॉट इट इज एट पाई बाय 6. तो अगर पूरे को पाई बाय 2 लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक पाई बाय 6 लग रहा है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने के लिए पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 दैट इज पाई बाय 3 का टाइम लगेगा. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes. लिख के ले लो.
Done, ma'am. डन. हो जाए तो बताना. Done, ma'am. पूरा हो गया सबका? Yes. Yes. ओके. नेक्स्ट इज the displacement of an oscillating particle is given by x is equals to a sine of omega t plus b cos of omega t, where a, b and omega are constants. Prove that particle performs SHM with amplitude of a is equals to under root of a square plus b square. So आपका एक पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहा है और ऑसिलेट करके वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी से उसका डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट किया गया है. मतलब ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी सेम है बट एम्पलीट्यूड्स अलग अलग है. We are asking कि calculate and show that the amplitude of the resultant will be a is equals to under root of a square plus b square. So if I use a trigonometry, x is equals to a sin omega t and b cos omega t दिया है. So what you can think of? ये a और b कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जो पाथ का डिस्प्लेसमेंट है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फिर से बोलो अक्षय. मैम पाथ का डिस्प्लेसमेंट है ना वो उसको a और b कंसीडर कर सकते हैं और फिर पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा. So यहाँ पर consider this as a and consider this as b. And this is theta. So यहाँ पे cos theta जो होगा आपका, and of course if it is 90 degree, this is a square plus b square under root. So cos theta is under root of a square plus b square, and sin theta is under root is b upon under root of a square plus b square. So x is equals to, basically it is a sin of omega t plus b cos of omega t. So
what we can do? Multiplying and dividing by under root of a square plus b square. Yes. So यहाँ पे हम लोग अंडर रूट ऑफ ये ले आते हैं. So a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अगर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो तो a बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस b बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos of omega t. So x is equals to under root of a square b square. Now this is your cos theta sine of omega t plus sine theta cos of omega t. So if you solve it, this you'll get, this is formula of sine of a plus b. यहाँ पे a is theta and b is omega t. So basically it is x is equals to a square plus b square sine of omega t plus theta. So this shows that if I compare it, x is equals to a sine of omega t plus phi. So your a here is under root of a square plus b square. समझा सबको क्या किया? Yes. Yes. लिख के ले लो. Once you're done, let me know. Done, ma'am. सबका हो गया? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now let's go to the next sum. What is the next sum? There is a spring attached with a mass of m1. The time period at this time is when the mass m1 is there. For oscillation, it takes t time. When mass m2 is attached, so m1 और m2 मिलके time period 2t कर रहे हैं. So they are asking to compare the ratio of the masses. m1 by m2. समझ में आया क्वेश्चन क्या है? Yes. So time period is equals to 2 pi under root of
m1 by k. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई. यहाँ पे टाइम पीरियड वाज t फॉर m1, और जब m1 और m2 दोनों हो गए तो इट बिकम्स 2t. समझ में आया? एंड स्प्रिंग इज ऑफ सेम मटेरियल, तो दोनों का स्प्रिंग सेम आया. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. डिवाइड द टू. So t by 2t is equals to 2 pi under root of m1 by k and 2 pi under root of m1 plus m2 by k. 2 pi got cancelled, tt got cancelled, under root of k got cancelled, you got 1 by 2 under root of m1 upon m1 plus m2. Taking square on both the sides, 1 by 4 m1 upon m1 plus m2. Cross multiplication. m1 plus m2 is 4 times of f1. So m2 is equals to 3 times of m1. यहाँ पे भेजा. So m1 by m2 is 1 by 3. समझा सबको सम क्या है? Yes. बोल रहा है जब m1 था तब टाइम पीरियड t था, और जब m1 के साथ m2 भी अटैच कर दिया तो टाइम पीरियड 2t हो गया. अब हमको निकालना है m1 by m2 का रेशियो. दिस इज वेरी क्लियर. Yes. Yes. लिख के ले लो. हो जाए तो बताना. Done, ma'am. सबका हो गया? Done, ma'am. Okay. Let's check next sum. Here there are two parallel resistance given. x1 is equals to 5 sine of 4 pi t plus pi by 3 centimeter, and x2 is equals to 3 sine of 4 pi t plus pi by 3 centimeter. We have to calculate if they superimpose. अगर दोनों superimpose होते हैं, we have to calculate the resultant amplitude and epoch of resultant SHM. Epoch का मतलब होता है थीटा, the angle that will exist between them. The angle that your resultant SHM will have is called as epoch. So आपके पास x1 है, x2 है. मैंने आपको सुपर इम्पोज कैसे होता है वो बताया, ये लिख के ले लो पहले क्वेश्चन. पीछे हमने सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल के लिए सॉल्व किया है कि एम्पलीट्यूड कैसे निकालता है. चलो यूज करो और निकालो, और बताओ मुझे कि व्हाट इज द
एम्पलीट्यूड एंड व्हाट इज द एपोक। पीछे हमने जो सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल का डेरिवेशन प्रूफ किया है उसी के हेल्प से करना है। सो गिव मी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट एपोक। चलो कर रहे हो ना? Yes. मैम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 7.937 है। हाउ मच? 7.937। और किसी को आया? Yes, ma'am. वही आया. ओके नाउ कैलकुलेट द एपोक वैल्यू। हमने जो tan थीटा करके निकाला है दैट इज द एपोक वैल्यू, दैट इज द थीटा ऑफ द रिजल्टेंट, दैट इज द फेज ऑफ द रिजल्टेंट SHM। use that tan theta wala formula from the back side of your notes। use logbook for the tan inverse calculation। जैसे sin थीटा देखते हैं वैसे नेचुरल tan देखो।
आपको बोर्ड्स में नेचुरल 10 के लिए नहीं देगा लॉग बुक, सो आपको 10 इनवर्स करके छोड़ना है इन द बोर्ड्स में आपको सिर्फ लॉग और एंटी लॉग मिलेगा. सो बट यहाँ पर गो फॉर द नेचुरल 10. नेचुरल 10 में जाके जैसे साइन थीटा निकालते हैं, वो वैल्यू के लिए कितना डिग्री और कितना मिनट्स है वो देखो, या उसके आसपास की वैल्यू के लिए कितना डिग्री या कितना मिनट्स है वो देखो फ्रॉम द लॉगरिथमिक बुक. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. So let me know once you're done. मैम 54 डिग्री 24 मिनट्स के आसपास है. How much? 54 डिग्री 24 मिनट्स. That's okay. Is there anyone else who got the same by using natural 10? जैसे साइन थीटा निकालते हैं, वो वैल्यू के लिए देखो कितना डिग्री और कितना मिनट्स आ रहा है. This is how you need to go. Apart from अक्षय किसी को आया? यस मैम मिला. कितना मिला? 54 डिग्री 23 मिनट. 54 degree 23 minutes. Okay. Let's move ahead to the next sum. Potential energy of the particle performing linear SHM is 0.1 pi square x square joule. If the mass of the particle is 20 gram, find frequency. So we know potential energy is half kx square. There is half k. Your omega square is k by m. So omega square into m is k. So omega square into mx square. Calculate and give me what is the frequency of the SHM. Potential energy दिया हुआ it is 0.1 pi square x square is equals to half m omega square x square. X square got cancelled. ये 2 यहाँ पे चला गया तो 2 into 0.1 is 0.2 pi square is equals to m omega square. 0.2 pi square divided by m. M is 20 gram. So convert it into 20 kg. So how much it is? 20 into 10 raised to minus 3 is equals to omega square. पहले बताओ ओमेगा कितना आ रहा है, फिर बताओ फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है. कैलकुलेट एंड गिव.
मैम डायरेक्टली ओमेगा में भी हम लोग 2 पाई n का फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, फिर पाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। चलेगा, कर दो। You people have exam on Thursday of oscillation? Yes. Okay. Done? Is this done, everyone? Yes or no? मैम कैलकुलेशन मैम ओमेगा 9.929 आया और n 15.58 हर्ट्ज। Much? 15.58 हर्ट्ज। 15.58. There's some mistake. It should go for 1.581. कुछ पावर में मिस्टेक किया है, गो थ्रू करो। Let's go ahead with the next sum. मैम मिला 1.58। The total energy of a body is 40 joule of a mass 2 kg. We have to calculate the speed at the center of an SHM. So we know at the center of the SHM is center मतलब mean position. Mean position means Vmax we are talking about. Calculate and give it to me. ये तो आपको खुद से करने आना चाहिए। टोटल एनर्जी दिया है, Vmax पूछना है, निकाल के दो। सिक्स 6.325 मीटर पर सेकेंड। Okay. Other people? Other people doing?
Done. Yes. Let's go to the next one. At what distance from mean position, kinetic energy of the particle performing SHM of amplitude 8 centimeter is 3 times its potential energy. Kinetic energy 3 times होना चाहिए potential energy का, और amplitude बोल रहा है 8 centimeter. Calculate and give me किस x पे ऐसा होगा कि आपको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर मिलेगी. काइनेटिक एनर्जी आपके हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से देता है, और पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर से. सॉल्व करो और बताओ मुझे कि दोनों को इक्वल, दोनों को 3 टाइम्स इक्वेट करो. काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी और एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपको दी है 8 सेंटीमीटर. बताओ मुझे कौन सा एक्स पैसा मिलेगा हमको. एट व्हाट एक्स यू विल गेट दिस कंडीशन. Four centimeter. Yes, it is 2 centimeter. Sorry, 4 centimeter. Let us solve. Other people are solving. Yes, Yes or ma'am. no? Yes, Miss. Once you're done, let me know. Done, ma'am. Okay. How much you got? 4 centimeter. So let's move ahead. Take this up. Sum is there is a simple pendulum performing SHM of time period 4 seconds. After how much time after crossing the mean position will the displacement of the bob is? The displacement of the bob, they are saying it is 1/3 of amplitude. That is a by 3.
So they are saying to calculate the time. So we know x is equals to a sine of omega t. A sine of omega. Omega is 2 pi by t into t. आपको टाइम पीरियड पता है, आपको एम्पलीट्यूड पता है, आपको x की वैल्यू पता है, निकालो आपको स्मॉल t का टाइम कितने टाइम के बाद वो क्रॉस करेगा. गिव मी द आंसर. आपको नेचुरल साइन और नेचुरल 10 देखने आता है ना लॉग बुक में. Yes. बताओ मुझे at what time, at what small t you will get this condition that your bob will cover the amplitude of a by 3, the displacement of 1/3 of your amplitude. Tell me if you're done. 0.2161. 0.165 seconds. And 0.2161 seconds. 0.2165 seconds. Okay. What about other people? Are you people calculating? हेलो मिस, हाँ बोल बच्चा. मुझे 0.210 सेकंड आया. 0.21. 0. कुछ देखने में मिस्टेक किया है साइन. फिर से देखो, एक बार फिर से गो थ्रू करो, नेचुरल साइन को वापस से देखो.
और किसी को नहीं आया? सिर्फ 2 ही लोग कर रहे हैं क्या सॉल्व यहाँ पे? Other people are not doing? Hello. यहाँ पे 17 लोग अवेलेबल है और मुझे 2-3 की आवाज छोड़ के बाकी किसी की आवाज नहीं आ रही है। कर रहे हो क्या आप लोग ट्राई? Okay, let's move to the next sum. A simple pendulum of a length 100 centimeter. Length is 100 centimeter. Performs an SHM. Find the restoring force. आपको F restoring निकालना है. On a bob of mass 50 gram. When the displacement from the mean position is 3 centimeter. Mean position से आपके बॉब ने 3 सेंटीमीटर कवर किया है, तब आपको restoring force निकालना है. So the displacement it has covered is 3 centimeter. 3 into 10 raised to minus 2 meter. So we know F is equals to, magnitude of F is equals to kx. So first you need to calculate k. And k is m omega square. And omega square is 2 pi by t the whole square. So first try to calculate the time period and tell me what is the time period. बताओ मुझे कितना टाइम पीरियड आता है. हमने फॉर्मूला निकाला था ना टाइम पीरियड का, t is equals to 2 pi under root of L by G. बताओ Yes. कितना टाइम पीरियड आ रहा है. L है आपके पास, G है आपके पास. पहले t निकालो, t से k निकालो और k के हेल्प से और x के हेल्प से रेस्टोरिंग फोर्स निकालो. पहले मुझे बताओ टाइम पीरियड कितना आता है. बताओ मुझे टाइम पीरियड कितना है बच्चों. इस t 2.07 सेकंड आया. यस, t is 2.07 seconds. मतलब टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड. सो ये आपको कुछ प्रूफ करके देता है. कहीं पर लिख लो स्टार मार्क करके कि अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम 1 मीटर के बराबर होता है तो मोस्टली वो सेकेंड पेंडुलम होता है.
याद है मैंने सेकंड पेंडुलम सिखाया था आपको? सेकंड Yes. पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है. दिस इज वेरी क्लियर. Yes. सो अगर कहीं पे भी आप लेंथ डायरेक्टली 100 सेंटीमीटर दैट इज 1 मीटर मिला तो आपको उसको सेकंड पेंडुलम कंसीडर करके सॉल्व कर लेना है. ये मैंने इसलिए आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करवाया कि आपको सच में ये प्रूफ हो कि हाँ 1 मीटर गिव्स यू 2 सेकेंड्स. सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसा कहीं दिया है कि 1 मीटर है तो डायरेक्टली यूज 2 सेकेंड एज अ टाइम पीरियड एंड सॉल्व द सम. समझा? Yes. Calculate and give me the restoring force now. Ma'am, force 148.05 into 10 to the power minus 4 Newton. Yes. How much you're getting? Repeat it. 148.05 into 10 to the power minus 4 Newton. Yes, it is right. What about other people? Other people are calculating. Is there anyone else who is calculating? Yes, miss, यही आया. कितना है बेटा? Now if you people, yeah, बोलो. 1.48 into 10 raised to minus 2 Newton. That's correct. ठीक है. So if you people have some doubt from the theory part of the chapter, you can ask. Is there any doubt from the back side of the chapter? Yes or no? मैम एक सम में डाउट है. बोलना बेटा. मैम वो सॉल्व एग्जांपल का सम एक्चुअली. Okay. So can you send me that some by MBC sir? अच्छा तुम Yes, लोग ma'am. कुछ pending questions भी है ना? I'll send you by this week. Actually I was so much busy with the projects. I'll send you by this week. मुझे Yes, याद ma'am. है एक और सम है. ठीक है. Send me that oscillation वाला मैं आज रात तक ही भेज देती हूँ because you people have an exam. और जो पीछे वाला सम है वो मैं जैसे टाइम मिलता है वैसे ही भेज देती हूँ. Yes. और इफ यू कैन रीड क्या प्रॉब्लम है तो फिर वो कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो तो अभी दिखा दो.
So whatever you feel okay. So that's fine. If you, Akshay, if you want, you can send it to MBC sir and he will send to me. I'll give you the solution. And I'll give you today itself only because you people have an exam. Yes, ma'am. So no doubts. So here you are